here are the top 5 teams. Baad baki from the 6th position to the 18th position, all these teams got eliminated way too early. Especially मैं बोलूँ अगर टीम पैना में 19 sides यहाँ पर 5 elimination इन लोगों के पास में भी रहेंगे. So they performed really well, but मैं कहूँ into this into the next wrangle coming up. But yeah, Boyne going and they're getting themselves a chicken dinner in the map of wrangle. They will also be having that momentum now, and DRX they probably are going to be starting to feel the pressure because now teams are closing in the distance between them and others. True, I mean the overall standing this is going to be a very important one, and especially मैं बोलूँगा यहाँ पर ये जो next match रहेगा बहुत ही ज़्यादा important रहेगा. नजर डालते हैं हम लोग एक बारी मैप रोटेशन के ऊपर, and let's see एज यहाँ पर क्या सिनेरियोस होता है मेरा मार के मैच के ऊपर, एंड कौन सी टीम लेके जाती है इस चिकन डिनर को. Longshim Red Force got the chicken dinner. Rondo, Voyen, Wrangle, and now Miramar. Will they be able to, get a back-to-back chicken dinner? Or can Longshim Red Force actually get themselves a second chicken dinner here pretty early into the day? This will help their momentum because their positioning is decent now on the overall, but the teams at the top are still picking up the pace and they're still running away with the lead. So if any of these any of these tier 2 teams can actually get another chicken dinner or have another 20-point a game without the chicken dinner, then we're probably looking at a close quarter finals here between the top 2-3 teams like we did in phase 2. But coming into the map of Miramar, Team Secret is going to be another team. I believe will have a really good shot at getting some points. They've been good on the Rondo. They did get themselves a 39 bomber. On the other Wrangle, they did make sure to get 23 eliminations. So now the only map left in which they haven't actually absolutely destroyed the opposition is the map of Miramar. So let's see if Miramar is going to be a different story and if it's going to be the team side of Team Secret who will be the one coming out on top at the moment. Ladies and gentlemen, this is Miramar Phase 3 Grand Finals coming into play. The flight path will be on our screen any second, and there you have it, starting off right in the dead center of the top north as we head down to Paltona. There's going to be a lot of these to wherever they want, from Campo Militar to Ruins, from Prison to Puerto Paraíso, from Monte Nuevo to Impala. Doesn't matter where you want to head down to, you will be getting yourself a chance here. As we see, all the teams are going to be coming in with all 4 players. Things are looking good here for these teams, and the flight path is pretty decent. Look at the highest damage. Sleepy and QXZZ actually is closing in the distance between him and Sleepy at the moment. So I believe Sleepy is probably going to try a bit harder here coming into this one. And HORAA, I mean, the grand finals are going great for them, but what would be a cherry on top would be a chicken dinner. It will probably help them get the extra bit of push that they need going into this grand finals. True, they need the zone man. It just shifted way too at the south moment. We can see some of the fights just happening, and right now इस जोन के अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज भी देखने को मिल जाएंगी, which will be a much more interesting one. 4 ट्राइब्स यहाँ पर फाइट के अंदर आएगी. एक प्लेयर यहाँ पर डाउन 4 ट्राइब्स के साथ में यहाँ पर M249 हाथ में फलक के इसी के साथ में यहाँ पर M249 54 बुलेट्स तो हैं, पर 2 प्लेयर्स यहाँ पर डाउन हो चुके हैं. इसको एक और प्लेयर यहाँ पर डाउन T20 पर ओपी, इसको पे तो सोलो में स्टैंडिंग एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 1v1 एक प्लेयर डाउन किया जाएगा. T20 पर ओपी अपनी शॉटगन के साथ में एक्सचेंज करेंगे. रिवाइव यहाँ पर प्लेयर को कर देते हैं. शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा एक थिंग हो सकती है, बट रिकार्डो के ऊपर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं RQ वर्सेस 4 ट्राइब्स. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड नाउ यहाँ पर इजाफा किया जाएगा एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जेनफोर्स, ना ही शॉटगन ना ही असॉल्ट राइफल, एक SMG हाथ में है उजी विद अ बोल्ट राइफल एक्शन स्नाइपर, एंड इट्स गोइंग टू बी एन M24. और इसी के साथ में यहाँ पर फुल स्टॉप डाला जाएगा. RQ जाती हुई एंड दे गॉट एलिमिनेटेड. Oh boy, oh, 4 tribes. They'll be happy with this as Naki comes in. I mean, he'll survive for now.
But T24 saving the day for them, saving the map here for them at the moment. Well, for now, 4 drives, they'll be surviving with 3 players and 4 eliminations. But here's the thing, Inferno. We've seen them struggle a lot of those times towards the area of Picado, right? And it's still going on. I mean, they're coming out on top most often than not, but they're being consistent. This Picado is turning out to be another Yasnaya. True. And now we can see फ्लैश ऑन द स्क्रीन एंड यहाँ पर हम लोग बात करें फ्लैश के बारे में सो देखिए डिफेंडिंग चैंपियंस है राइट फेज 1 भी जीते थे फेज 2 भी यहाँ पर ये लोग लेके गए थे अपने नाम सो देखते हैं यहाँ पर फ्लैश अभी यहाँ पर फेज 3 के अंदर जीत पाते या फिर नहीं क्योंकि थोड़ी बहुत जो सिचुएशंस हैं इन लोगों के लिए अच्छा नहीं लग रहा है इस लम्हे के अंदर इस लम्हात के अंदर नाजुक सूरत हाल यहाँ पर टीम फ्लैश के लिए बट FN की टीम FN शाहजहां हम लोग देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स यहाँ पर ये लोग लेने के बाद में जोन के अंदर अपनी एंट्री बनाएंगे एंड द ऑडियंस वाचिंग आउट देयर गाइस देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर 141 ई स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए अभी जाके 141 ई स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप ऑन सपोर्टिंग देम गाइस बिकॉज़ वी आर पुटिंग अप अ ग्रेट शो फॉर यू ऑल एंड होपफुली आप लोगों को भी यहाँ पर मैचेस अच्छे लग रहे थे एंड देखिए स्पेशली हम लोगों ने यहाँ पर जो पिछला मैच देखा इट वाज एन इंटेंस वन इतना ज्यादा क्रेजी मैच मैं बोलूंगा यहाँ पर के अंदर हम लोगों ने बहुत समय बाद जाके देखा एंड बहुत समय तो नहीं बट प्लेऑफ्स क्वालिफायर्स के अंदर हम लोगों ने कुछ अच्छे मैचेस देखे थे बट दिस वन इज वन ऑफ अ गाइड सो जाइए आप लोग जाके अभी सब्सक्राइब करिए बिकॉज़ यू विल बी गेटिंग ऑल दीस काइंड ऑफ मैचेस राइट सो जाइए अभी जाके सब्सक्राइब करिए क्योंकि अभी तो यहाँ पे एक इनवाइटेड टूर्नामेंट रहेगा जहाँ पे इनविटेशनल टीम्स खेल रही है राइट आप लोगों को आने वाले समय के अंदर पब्लिक टूर्नामेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे जहां पर पब्लिक टीम्स भी क्वालिफाई करेंगी आप लोग वहां पर रजिस्टर कर सकते हो खेल सकते हो सो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लाइन अप है ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप ऑन सपोर्टिंग 141 esports सो गो एंड मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड नजर डालते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे दोबारा मैच के ऊपर क्योंकि द जेवियर्स के खिलाड़ी यहाँ पर खिलाड़ी क्या एक अकेला प्लेयर यहाँ पे बचता हुआ और ये खिलाड़ी क्या यहाँ पर क्लच ऑफ कर पाएंगे या फिर नहीं टीम FN के अगेंस्ट एंड FN शाहजहां हम लोगों ने कल के मैच के अंदर यहाँ पर एक इनसेन मोमेंट देखने को मिलता है ग्रेनेड इट वाज रियली क्लोज फाइनल इसी के साथ में यहाँ पर जेवियर्स के खिलाड़ी होते हुए बाहर एंड एलिमिनेशन यहाँ पर आता हुआ द जेवियर्स के खिलाड़ियों का दे गॉट एलिमिनेटेड वे टू अर्ली ऑन द 17th स्पॉट But the thing I was talking about, टीम FN शाहजहां कल के दिन के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने एक लेजेंडरी मोमेंट देखा एशिया बैटल चैप्टर 3 के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर ग्लू ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट सभी लोग फाइट ले रहे थे एंड जो ग्रेनेड्स इन लोगों ने दागे थे एक नहीं मतलब एटलीस्ट 15-16 ग्रेनेड्स या फिर 17 से 18 ग्रेनेड्स तो दागे होंगे एंड तब जाके यहाँ पर वो चिकन डिनर लिया था एंड दैट वाज अ वेरी इनसेन मैच अगर आप लोगों ने एक्चुअली कल की स्ट्रीम नहीं देखी है सो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि एक बार दूसरा राउंड का मुकाबला जरूर देखिए और उसका लास्ट मोमेंट देखिए जब टीम FN ने वो चिकन डिनर निकाला था इट वाज अमेजिंग टीम बिगोट्रॉन बाय वाइटैलिटी टीम BTR कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट के अंदर इजाफा नहीं एंड बूम ई स्पोर्ट्स के यमी डाउन हो चुके हैं साइज की गोश्त की तरफ से यहाँ पर कुछ ये जो है शॉट्स आएंगे ए साइड ई स्पोर्ट्स के K2 डाउन हो चुके हैं FL Zeus आएंगे यानी टीम फ्लैश द डिफेंडिंग चैंपियंस फाइनली यहाँ पर आएंगे एंड बूम ई स्पोर्ट्स के यमी को सीधा के सीधा फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा एंड साइड्स के गोश्त हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहला एलिमिनेशन अपनी टीम को दिलाएंगे and hopefully you guys are having a great time because we are having fun on the channel 141 esports and make sure to hit that like and subscribe हम लोग आप लोगों को बार-बार रिमाइंड कर रहे हैं क्योंकि you guys don't like and sub man I mean come on कर दीजिए जाके keep on supporting them मैच के ऊपर दोबारा से वापस आते हैं टीम फ्लैश द ग्रेनेड टॉप्स की तरफ से यहाँ पर एक ग्रेनेड आएगा एंड एसआईटी स्पोर्ट्स के K2 को डायरेक्टली फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा एंड लॉबी तक का रास्ता उनको दिखाया जाएगा सो एसआईटी स्पोर्ट्स a good damn performance it was incoming but still कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं क्रिप्टो को भी यहाँ पे डाउन करेंगे वी का he is going to be the man taking that player down A side esports this team is a legendary team right now क्योंकि पहला फेज जीते राइट पहला फेज जीतने के बाद में दूसरा फेज भी जीते so that was a very legendary moment अगर एक और बार जीते so it's going to be a mythical one but FL Zeus down हो चुके हैं and Iron team एसआईटी esports की तरफ से स्टार रहेगी हाथ में विद द सप्रेसर एक मोलोटॉव यहाँ पे दागी जाएगी ना कि जो मोलोटॉव की कंडीशन है वीका के ऊपर जरूर आ सकती है एंड इसके साथ में नहीं वो मोलोटॉव की कंडीशन नहीं आएगी टीम एसआईटी esports होती हुई बाहर इस गेम से एंड दे आर गॉन एंड आउट ऑफ द मैच
Man, I mean the DRX, this Korean team, इन लोगों की तो क्या ही कहने. ये टीम बहुत ही ज़्यादा amazing. DRS के players अभी के लिए हम लोग यहाँ पर killer white ही देखने मिल जाएंगे. Maraka, preda, shorma ko. Bugattis and Zeta, that Porsche. I mean, I have to say all these vehicle skins, they look amazing. Alright, चलिए audience, let me ask you a question and I guess आप लोग को बताया होगा मैं कोई question पूछने वाला हूँ and maybe मैंने एक बारी ये question पूछा था but उस समय हमारी watching थोड़ी कम आ रही थी. मैं आप लोगों से एक बारी question ज़रूर पूछना चाहूँगा दोबारा से. What is your favorite vehicle skin in PUBG Mobile? Right? हम लोग को बताइए comment section के अंदर आप लोग की favorite skin क्या है PUBG Mobile के अंदर. And देखिए मेरी personal favorite रहेगी that Porsche. This particular Porsche, it looks amazing. And especially Paganis, they're also good. But आप लोग यहाँ पे बताइए कि आप लोग की favorite PUBG Mobile के अंदर vehicles can क्या? Do let us know and make sure to hit like and sub. but एक बारी हम लोग यहाँ पे नजर डालते हैं एक बारी एक दफा zone के ऊपर क्योंकि ये जो zone है majority of the team zone से बाहर. एंड हम लोग को पता है कि देखिए जोन के अंदर जाना पड़ेगा एंड जोन के अंदर डायलेशन दिखाना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं जाके अपने कंपाउंड्स को होल्ड करना पड़ेगा. अभी भी हम लोग यहाँ पर फाइट डाउन सिनेरियोस नहीं देखने को मिल रहे हैं एंड नाउ वी कैन सी DRX मैन दे आर नॉट into the fight down scenarios and now we can see DRX. देखिए शायद से एलिमिनेशन पॉइंट्स की बारी यहाँ पर आ चुकी है. And now this is the moment for them. Killer, Whitey, everyone, they are coming up with the spot. And name secrets. हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे BTR के against. Then this white will be coming on top as well. DRS यहाँ पर एक प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं. रिवाइवल की दरकार यहाँ पर रहेगी. इसके साथ में और भी शॉट्स यहाँ पर दागते हुए टीम सीक्रेट्स के खिलाड़ी. And क्या इनका कोई भी, मैं बोलूँगा कोई भी आखिर कोई भी टीम 39 पॉइंटर का जो एक मैं बोलूँगा रिकॉर्ड था वो तोड़ेगा या फिर नहीं. क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा है कि कोई भी टीम टॉप पे आई ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा. सो होपफुली यहाँ पर हम लोग 40 पॉइंट 41 पॉइंटर्स देखने को मिलेंगे या फिर नहीं. बट टीम सीक्रेट्स अभी यहाँ पर DRX के ऊपर कहर मचाते हुए एंड इजाफा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर किया जाएगा. एंड इस 4v4 बैटल के अंदर एक और प्लेयर को यहाँ पर आउट किया जाएगा. तरंग एक बेहतरीन 1v2 उसके साथ में एक 1v3 हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकता है. इसके साथ में 3 अगेंस्ट बट नो तरंग उनको यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा 2v2 के अंदर फाइट. Interesting, and there we have it. Chuki with his team, he is just reigning supreme. And Zed is अभी के लिए यहाँ पे सोलो में standing इसके साथ में यहाँ पे DRX पे होते हैं बाहर. Oh my God, let me have a couple of breaths or something. Because that 4v4 fight, it was an immense win. And जैसे ही वो फाइट ओवर हुई हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक और फाइट इनिशिएट हो चुकी है. क्या चल रहा है अभी यहाँ पर हमारे मिरामार के मैप के ऊपर. इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द जोन. ये पूरे जोन का इफेक्ट है क्योंकि जो जोन एक बहुत ही ज्यादा भयंकर हार्डशिप लेके जाएगा. जोन के अंदर जाना पड़ेगा एंड इस हार्डशिप से गुजरना भी पड़ेगा. राइट सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं HORAA esports के प्लेयर्स स्प्रेस दागते हुए स्काई फोर्सेस के खिलाड़ी जिगल के अगेंस्ट. एंड मैं बोलूँगा पूरी टीम HORAA esports उन लोग के अगेंस्ट है. स्काई forces versus HORAA esports is going to be a great fight, but the defending chicken dinner players, the defending teams who took the chicken dinner on the map of Randall, उन्होंने लिया एक बेहतरीन नॉकआउट स्काई फोर्सेस के खिलाड़ियों के ऊपर. अर्न अप डाउन हो चुके सांचे सुलमन स्टैंडिंग. क्या है रिवाइवल हो पाएगा या फिर नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है कि वॉर्न esports के खिलाड़ी यहाँ पर आके सीधा का सीधा पुश इन करेंगे. जी हाँ, ये वॉर्न esports के खिलाड़ी तो नहीं थे बट HORAA esports के शेर और इसी के साथ में द नेपाली टाइगर्स HORAA esports aka they pick the players down and they are gone out of the match. HORAA esports 3 elimination and 4 players standing. And Jiggle मेरे को दाद देनी पड़ेगी उस प्लेयर की क्योंकि पिछले स्टैंडिंग भले ही थे बट स्टिल उन्होंने कितना बेहतरीन खेला था. अपनी प्लेयर्स एंड टीम्स को दिलाया था पोजीशनिंग पॉइंट. सो दैट इज जस्ट अमेजिंग. एंड राइट नाउ HORAA esports बहुत एक इजी काम और पेशेंट गेम प्ले के साथ में इजाफा करते हुए गेम के अंदर which is really important. देखिए गाइस, अगर आपके पास में एलिमिनेशन पॉइंट है मैं बोलूँगा या फिर आपके पास में एक अच्छी पोजीशनिंग है थोड़ा सा यहाँ पर मैं बोलूँगा स्लो डाउन होना पड़ेगा. एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग स्लो पेस गेम प्ले के साथ में खेलें बिकॉज आप लोग अपने एडवांटेज को डिसएडवांटेज के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाहोगे. ऑल यू नीड टू डू जस्ट बी वे टू विजिलेंट
be to having the patience, right? Because patience is the key, and gunpowder and the coordinations is gonna be your main factor, and those spices on the decision. So patience and coordination होना बहुत ही ज़्यादा important है. Now अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिगोट्रॉन by vitality. कोई भी elimination points के अंदर इजाफा नहीं. And elimination points यहाँ पर लेने पड़ेंगे. It's very important for them to pick those elimination points, or else it's going to be really bad. क्योंकि जब ये point table change हुआ उसके बाद में हम लोग को पता है कि 10 points आप लोगों को मिलते हैं for getting that chicken dinner. So just imagine अगर आप लोगों के पास में elimination points ही नहीं है, so वो 10 points क्या कर लेंगे, right? So at least you need more than 7 or 9 elimination for having a very decent game. नजर डालते एक बारी हम लोग यहाँ पर दोबारा से ओवरऑल स्टैंडिंग्स के ऊपर भी. HORAA esports, Noxian Red Forces on One esports with Sky Forces and DRX. Sky Forces and DRX दोनों टीम्स यहाँ से बाहर होती हुई गेम से. And मैं बोलूँगा टॉप 5 के अंदर तो थे, but they got eliminated on this second के अंदर जो जोन है. अब यहाँ पर क्लोज इन करेगा 15 और सेकंड, और इसके बाद में हम लोग को और भी ज्यादा रोटेशनल क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं, और भी ज्यादा फाइट्स देखने को मिल सकते हैं. एंड नाउ एज वी कैन सी flashes on our screen with 5 elimination points. And Tandem. Well, they're not going to be on our screen anymore with 1 elimination. Gonna go out. As the circle closes in, things are looking decent for a lot of these teams. The DRS will be coming in and chilling at the moment. Team Flash are here, finally able to see both of these teams doing better here on the map of Miramar. It's been a while since we've seen them in action and be consistent here on this map. And looks like Team Secret now trying to put the screws to the players on the side of Team Flash. But then DRS, they join in. They third party this and take down one of the players inside of Team Secret. Team Secret are closing the distance between them and Flash. This might be a bad idea, because now the numbers advantage are clearly in the favor of Flash, but the player is still on his knees, so they got to be careful. As Shamu, he's going to get one more. The DBS, Ready Supreme Vika is going to get taken down. Team Flash, can they capitalize? Can they go for the revival? The first question is top. He's going to be out in the open, but DRS Gaming is still there. Third partying this fight, as Zeras is going to be dropped. 2K and Shamohi, the only one standing on the side of Team Secret. There's 2 players on the side of Flash here. They will not be able to go for the revival onto Bose. And I think the revival is coming in right now as Boyne with the chicken skirts coming in, getting taken out. A good grenade there, I believe. Will be doing a bit of damage, but not enough to take any of these players down. As Zeros and Triangle gone already. Team Flash are down to 2 players against 3 on the side of Flash now, thanks to the revival. Wait a second. I don't think the revival came in. I see the elimination there actually. So unfortunately, Flash will also be down to 2 players, and now DRS are going to be waiting for the perfect opportunity to go for the third party in between the fight between Flash and Team Secret. So they can actually capitalize and get 4 extra points, and 2 more teams will be wiped out of the server. True. That could be the case scenario. And now, Team Secrets. ये जो टीम्स है, ये जो प्लेयर है, हम जब भी टीम सीक्रेट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आज आदत हो गई है कि शायद से टीम सीक्रेट्स हर एक मैच के अंदर, या फिर हर एक तो नहीं, बिकॉज वी कैन नेवर एक्सपेक्ट देम डूइंग दैट वंडरफुल गेम प्ले अगेन एंड अगेन एवरी टाइम, बट कहीं ना कहीं आदत तो हो गई है कि शायद से उन लोगों के पास में जो एलिमिनेशन पॉइंट्स हो सकते हैं. बट टीम सीक्रेट्स अभी के यहाँ पे 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं, 5 एलिमिनेशन पास में नहीं है. एंड नाउ वी कैन सी कि DRS का फ्रैग एंड किलर वाइटी एंड एवरीवन फ्रॉम साइड ऑफ DRS दे आर हियर, एंड शायद से जो फाइट है यहाँ पे कभी भी इनिशिएट हो सकते हैं. फाइनल यहाँ पर अभी के लिए डाउन करेंगे कुछ प्लेयर्स को. डी प्लस किया को बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर डी प्लस किया ने दिखाया तो है, बट अभी के लिए मैं बात करूँ उस टीम के बारे में, दे आर स्ट्रगलिंग इन द ओवरऑल स्टैंडिंग्स एट द 8th spot of the first phase. Eliminations here for Team Secret, and they're holding on to this position. Stage for circle coming to a close. They'll be waiting for the perfect opportunity to go for the rotations. At the moment, you can see FN dropping down players on the side of D plus Kia, but the retaliation is going to be coming in with the QBZ2. As Sights, they want to go for the third party here. They might actually come out on top because they do have the numbers advantage over both these teams. FN down to 1 player, D plus Kia on the verge of getting eliminated too, and I think FN's gone first, and Porico's going to get out too. So Sights, I mean, not a lot of eliminations coming in, but the third party worked out. They will be able to
get a couple of points here going in, and well, 2 more teams will be eliminated here. Down to top 9, 29 players now. 80-minute mark just hit. Stage 5 circle coming into play. The drift is not that bad, and sides, they will have a lot of cover still, and they will have a lot of time to get themselves back into the zone. True. And now टीम साइड्स देखिए यहाँ पे जो टीम है टॉप 18 के अंदर आई थी यहाँ पे पिछले क्वालिफायर्स के अंदर एंड स्टिल इट दे मेड देयर वे इनटू हियर एंड मैं बोलूंगा मतलब टीम साइड्स यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी हर प्लेयर की बेहतरीन यहाँ पर खेलते हैं एंड टक्कर दे सकते हैं यहाँ पर दूसरी पाकिस्तानी टीम्स को जैसे वो गए एंड ए साइड ई स्पोर्ट्स क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन ही इतनी ज्यादा बेहतरीन हो रही है सो टीम साइड्स इज वन ऑफ द टीम्स वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी नीड टू सपोर्ट द प्लेयर्स एंड द लैड्स एज वेल बिकॉज़ दे आर जस्ट अ वेरी ग्रेट टीम जैसे डालेंगे हम लोग एक बार मिनी मैप के ऊपर जोन के सेंटर में अभी तक हम लोग को कोई भी टीम नहीं देखने मिलेगी बट अभी के लिए फोर्थ के खिलाड़ी 4 एलिमिनेशन लेने के बाद में आई क्यों कि यहाँ पर खामियाजा अभी के लिए भुगतना पड़ा One player down, that's it. Fourth drive still standing tall with 3 players here. 4 eliminations into their name. This is turning out to be another decent performance coming in from them. Will they be able to capitalize and turn this into a chicken dinner? Now that is what we need to wait and watch. It's UK the only one standing now here on the side of Team Secret. Team Flash are still holding on to their ground here on this part of the map with 2 players standing. The circle is now going to be collapsing. It will have to be out in the open as DRS. Now the tables have turned. Oh boy. The third party coming in from Secret. But it will not be enough. But BTR will be happy with this intervention as they will be able to get themselves a couple more points onto the players on the side of DRS as they are down to just 2 players and Flash are out in the open. UK will be in a situation where he will also be going out with a buggy, I believe, that is there, and DRS are gone. BTR will be happy to eliminate them with 3 eliminations now in their name. True. And now हम लोग देख सकते हैं टीम सीक्रेट्स के जूके सोलोमन स्टैंडिंग एक ग्रेनेड आया और शायद से मैं बोल सकता हूँ कि प्लेयर यहाँ पे खत्म हो सकते हैं इसी के साथ में ग्रेनेड तो नहीं कीबो की तरफ से हम लोग देख सकते हैं स्प्रेज आएंगे बूम ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स लेके जाएंगे उस आखिरी एलिमिनेशन पॉइंट्स को खत्म किया जाएगा सीक्रेट्स को दे आर ऑल द मैच वी गॉट बाय वाइटैलिटी द डिफेंडिंग चैंपियंस एक प्लेयर को कामयाब भुगतना पड़ा इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पर सूरत हाल तो मैं नहीं बोलूंगा गंदे हैं बट अच्छा खेल रहे हैं बट ऐसे ही यहाँ पर इन लोगों को मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेशन दिखाना पड़ेगा एज और एल्स बोल सकते हो दिक्कत शायद से बूम ई स्पोर्ट्स को झेलनी पड़ सकती है 7 teams, 23 players here. HORAA once again giving us hope. There's a really good chance that they can once again come out on top with the chicken dinner. 5 eliminations. The Sky is having a really good time at the moment, and the positioning here on the map is good too. Well, let's see how things are going to unfold as the game progresses. Nongshim is also doing really well in terms of consistency. They once again are surviving here with 4 players going towards the end of the game as a circle. Oh boy, boom, sights. 4 tribes, T24, Jiggle. I mean, I believe HORAA is going to be having an easy way in along with BTR. But Boom and Sights, they might be in for a treat here. And look at Zeus. He's going to be, just trying to hold on to his position, survive for as long as possible. The 2 sovereign players here on the side of Flash. True, and now HORAA esports and First Tribes के बीच में जो टकराव है बहुत ही जल्द स्टार्ट हो सकती है 4-on-3 की बैटल हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकती है बट अभी के लिए यहाँ पर बूम ई स्पोर्ट्स का एक खिलाड़ी ब्लीड होता हुआ रिवाइव करना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रैप शॉट एंड कीबो अभी के लिए यहाँ पर टीम साइट्स के अगेंस्ट जो इंडोनेशियन टीम है पाकिस्तानी टीम्स के अगेंस्ट कभी भी फाइट ले सकते हैं टार्जन बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं एंड एच द थिंग आई जस्ट स्पेकुलेटेड कि यहाँ पर HORAA esports एंड टीम फोर्थ ट्राइब्स पास ही पास में कभी भी यहाँ पर किल फीड के अंदर एक्टिवेशन आ सकता है इन दोनों की टीम्स के बीच में 5 डाउन सिनेरियोस यहाँ पर आ सकते हैं एंड कीबो applying a new set of tires so that easily rotate करेंगे and zone के अंदर यहाँ पर पहुंचेंगे Holding on to their ground at the moment, Jigo will be hitting the deck though. Got to be careful. Huzaifa is spotted, and HORAA esports, they might go for the retaliation here on the players inside of 4 tribes. As they might get third partied by BTR here as well. So they should be a little careful as Sky
finally puts one down, and as I said, the intervention coming in from BTR, the third party, is there. So now HORAA in a lot of trouble as two players get taken down. BTR taking fights on multiple fronts. This is not going to be an easy fight if they all decide to retaliate, against BTR. But in the moment, I feel like 4 tries are gone. A great grenade and a little bit of support coming in from HORAA. हाँ बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पर जिगल की तरफ से बेहतरीन ग्रेनेड और बाहर किया जाएगा फेडरल्स। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं बीटीआर की तरफ से कीबो को इसके बाद में डाउन करेंगे। जी हाँ इसके साथ में हम लोग देख सकते हैं एक और टीम का एलिमिनेशन बूम ई-स्पोर्ट्स होती हुई बाहर एंड एलिमिनेटेड टॉप 5 टीम्स वन विन एंड नॉन-चैंपियन फोर्सेस HORAA ई-स्पोर्ट्स टीम साइट्स सर्वाइव करेंगे 4 हुई अपने प्लेयर्स के साथ में। बीटीआर के पास रहेंगे यहाँ पर 3 प्लेयर्स टीम स्लैश दे सर्वाइविंग इट 2 H what do you think is this HORAA ई-स्पोर्ट्स is it non-champion forces because I feel like it's going to be HORAA ई-स्पोर्ट्स this time. I think it is probably going to be HORAA e-sports this time coming out on top. I'm not really sure if there's going to be anyone else that can actually take him down. Sights, Flash, BTR, Nongshim, HORAA. HORAA esports. They will probably be happy with the performance already. 8 eliminations coming in. That is a great performance coming up. True. That is a great performance indeed incoming. And अभी बिगटन व वाइटैलिटी के खिलाड़ी साइट्स का एक ऐसे खिलाड़ी डाउन जी हाँ और ये नहीं कि HORAA ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जो साइट्स के खिलाड़ी के ऊपर कायम मचाते हुए एंड कब्जा करते हुए दबदबा अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं HORAA ई-स्पोर्ट्स का बनता हुआ लॉबी के अंदर एंड देयर हैविंग द हायर नंबर ऑफ विन परसेंटेज चांस एज। सो मे बी यहाँ पर हो सकता है कि दोबारा से HORAA ई-स्पोर्ट्स दोबारा से सेकंड डिनर को लेकर जाए एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउटलॉ लीड करते हुए साइड्स की तरफ से एंड इट्स अ रियली बैड सिचुएशन फॉर देम। टार्स 99 यही है मौका उन लोगों के लिए एंड बीटीआर कैंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उन लोगों की तरफ से भी कुछ शॉट्स आ रहे हैं। HORAA ई-स्पोर्ट्स मिड टू लॉन्ग रेंज के बीच में जो फाइट है टकराव यहाँ पर स्टार्ट होती हुई एंड यहाँ पर HORAA ई-स्पोर्ट्स क्या यहाँ पर जोन के अंदर जाने का ट्राई करेंगे क्योंकि 8 एलिमिनेशन हो चुके हैं एज एंड डबल डिजिट में शायद से बढ़ सकते हैं कभी भी ये टीम। The double digits in terms of eliminations, they'll be happy. And DRX now are going to be much more intimidated by all of these teams because the distance now between them and the other second, third, fourth positions are definitely going to be contested and going to be reduced. So these teams, we'll be looking forward to see if they can turn this game around and get themselves a chicken dinner. शॉट्स यहाँ पर आते हुए नॉन-चैंपियन फोर्सेस के XZY एंड क्लोज रेंज एनकाउंटर फेडरल्स के अगेंस्ट एंड इसके साथ में यहाँ पर HORAA ई-स्पोर्ट्स ओह माय गॉड वेट जिगल इज गोइंग टू बी सोल्ड विद स्टार्टिंग एंड क्या यहाँ पर एक डेजा वू मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है क्योंकि जिगल यहाँ पर सोल्ड विद स्टार्टिंग पे पिछली बार की एंड इसके साथ यहाँ पर जिगल स्पॉट कर लिया जाएगा एंड ही इज गॉन ओह माय गॉड हाउ What in the world HORAA ई-स्पोर्ट्स got eliminated? I mean what edge जहां पर HORAA ई-स्पोर्ट्स के पास में सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज था उस एडवांटेज को कायम ना रख पाए एंड HORAA ई-स्पोर्ट्स बाहर हो गए गेम से। ओह माय लॉर्ड। HORAA esports, we were expecting them to get the chicken dinner, but now they turned the tide around. All of a sudden, getting taken down pretty early into these last fights. As Federals are going to be confirmed by Tarzan, Sights will now be in a position of power as well. They will be able to take down the players inside of PTR, and there you go. The last player did fall off to his death, unfortunately, he's going to get taken down. Stage 8 now coming into players. Nongshim Flash Sights are the only one standing. Flash with 2 players standing has always been a problem for all of these teams. We know how good Flash are, especially in situations like this. They're always a threat, and they still are. Nongshim with 3, Sights with 2. Nongshim on the verge of getting a second chicken dinner for themselves. Absolutely. And now we can see Nongshim Red Forces team Flash team Sights यहाँ पर इस फाइट डाउन सिनेरियो के अंदर जहाँ पर नॉमशन के पास में एक एडवांटेज है एक अटल एडवांटेज लोगों के पास में रहेगा
टीम साइड सभी के लिए यहाँ पर ग्रेनेड्स डाले जा रहे हैं लोगों के ऊपर। इसके साथ पहला नॉकआउट यहाँ पर आउटलेट निकालेंगे। दिस पाकिस्तानी लैड इज डूइंग अमेजिंग। इसी के साथ में 2 प्लेयर्स जिंदा रहेंगे। एक सी भाई के पास में रहेगी एक P90 एक और बेहतरीन 1v2 आउटलॉ की तरफ से। एंड मैं वही बोल रहा था कि शायद से साइड से कैसी टीम है जो आउटशाइन करेगी किसी भी टीम को पाकिस्तान से। एंड दीस प्लेयर्स आर जस्ट डूइंग ग्रेट। साइड सभी के लिए यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और पूरी टीम को बाहर करेंगे। एंड फ्रॉम कोरिया टीम नॉन फोर्सेस हारते हैं पाकिस्तान से। दे आर गॉन आउट ऑफ द मैच एंड नाउ टीम फ्लैश द डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रॉम प्रीवियस फेजेस। क्या यहाँ पर साइड्स इन प्लेयर्स को डाउन कर पाएगी या फिर एक 2v2 बैटल के अंदर। बट टीम साइड्स दिस इज द फाइट। दीज लैड्स दीज प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान आउट ऑफ नोवेयर दे कम हियर भैया एंड शायद से चिकन डिनर लेकर जा सकते हैं। दिस इज द परफॉर्मेंस वी वांटेड टू सी। एंड साइड्स कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये प्लेयर्स ऐसा ही खेलेंगे और ऐसी ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस होती है। Team Flash, this is the perfect opportunity for them to strike. But same thing could be said about Sights. This is their game to lose now at this point. They are going to be coming in, but Tarzan will be spot out. Oh no. Oh no, Team Flash, I think the patience has worked out. Outlaw. Now in a 1v2. The zone is against him. Oh lord, this is turning out to be a disaster. And Team Flash, once again, the patience comes out on top. And well, they will camp their way to the winner chicken dinner. Oh man, that was a great match. That was a great freaking match, Edge. मेरा मार यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग जरूर विटनेस करेंगे एक बारी राउंड का मुकाबला। बट जो भी ऑडियंस हम लोग यहाँ पर अभी भी लाइव देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो चाहिए जल्दी से सब्सक्राइब करें बिकॉज़ व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। ऐसे ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों को इन टीम्स की तरफ से देखने को मिलेगी। एंड दिस इज व्हाट यू आर विटनेसिंग। दिस इज एशिया बैटल वर्ल्ड चैप्टर 3। लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑनटू अ मैच हाइलाइट्स नाउ। The match highlights. If you take a look, I mean, you can see the both sides once again. They were on the verge of getting taken down here towards the map of Picardo. Pretty early into the game, but then T24 saved the day for the squad, and they did survive towards the later half of the game as well, which was pretty important for them because those points were crucial coming in. The consistency is not looking good for the side of 4-12 at the moment, but they are trying their best. DRX getting taken down pretty early into the game was a situation, was the point where we felt like maybe now it's time for the other teams to actually step up and maybe close in the distance, and that's exactly what happened. Team Flash especially, with just 2 players standing, they played it out beautifully. And here, the moment where Sights absolutely went havoc. That was the third party fight that they came in, then they came out on top, and after that, towards the end, they were able to take down multiple teams too. Those elimination points are going to be coming in handy for the side of Team Sights. True. And HORAA esports now they were the team getting eliminated at this moment. And कहीं ना कहीं लगता रहा था कि HORAA esports शायद से इस चिकन डिनर को नाम लेके जा सकते हैं। फेडरल्स यहाँ पर स्पॉट हुए एंड इसी के साथ में उनको यहाँ पर डाउन किया गया था। And now we can see Sights, Outlaw, everyone out there in Sights especially, man. That 2v2 was a very important one, but it did not turn out to be a massacre one, and that was a very close match. That was indeed a very close match, and that grenade actually coming in from tops was the most clutch grenade I've seen in a bit. That was very important for the side to actually take control of the game at that moment. And you can see tops with 4 eliminations, Zeus with 3, 1 with 1 for balls, and Vico and 2 eliminations. Team Flash, those damage outputs coming in from Zeus and tops are ridiculous, and they will carry their team towards another beautiful chicken dinner. Indeed, man, a beautiful chicken dinner, and they're showing up, man. I mean, they're showing why they were the best in the previous phases and why they were putting up a show for us in the previous one. And now we can see Team Flash will be taking the chicken dinner. नजर डालते हैं एक बार हम लोग हमारे MVP के ऊपर, and ये रहेंगे बिगोट्रॉन में विटालिटी की तरफ से केंट। 7 एलिमिनेशन, 4 नॉकआउट, 26 मिनट का यहाँ पर सर्वाइवल टाइम, 2 असिस्ट, 900 से ज्यादा डैमेज एंड 100 से ज्यादा हील इन लोगों ने पैच ऑफ करी। एंड व्हाट अ मैच इट वाज केंट, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी के लिए बीटीआर चिकन डिनर नहीं लेके
match it was. Players are enough to havoc in the server, and that's exactly what happened there. Coming in 817 damage for Zeus, 3 eliminations, as these are going to be the top 4 players. As we now take a look at the top teams to take to watch out for, it's definitely going to be HORAA. Obviously, I'm not really sure how they keep getting taken down. That is kind of unfortunate. And Flash coming in with 10 eliminations. PTR with 10, FN with 7 getting taken down relatively early, if you ask me, still yet again. But we're done with the first cycle of maps. We'll take a look at the match summary and then the match standings, of course, to take a look at how big of a difference we're talking about in the overall standings. Absolutely, the match summary is 68, total elimination 8, grenade elimination 1 airdrop was looted, 8,000 plus healings were patched off, and Sleepy lays down your longest elimination go. Sleepy, man, 1 meter incoming, and HORAA Esports, guys, let me tell you, they are just reigning supreme everywhere today. I mean, HORAA, the grand finals is amazing. It's a great grand finals for them. They just can't, convert it into a chicken dinner. That's the only problem at the moment. But apart from that, in terms of elimination, in terms of position placement points, they're doing decent. And with the consistency as well, if they keep going on like this throughout the grand finals, I think they might just be coming out on top even without a chicken dinner. But the consistency has to be there coming in. Well, now taking a look at the match rankings, 20 points for Flash, BTR on 14, 13 for Sides, HORAA on 11, Nongshim on 9, 7 for FN, Team Secret on 6, along with 4 tribes, 3 for Boom and D plus here, 1 and 2, DRS and Skyforce on 2 as well, 1 for RQ and Pandem, and none for DRX, DX, and ASI 8. True, and now we can see these teams in the match rankings. इसके बाद हम लोग एक दफा नजर डालेंगे हमारे overall rankings के ऊपर भी. And overall rankings है यहाँ पर हमारे पास रहेगा पहला पेज जहाँ पर HORAA Esports. Oh my freaking lord, HORAA Esports. It's their time to shine now. It is their time to shine. Team Flash, Edge यहाँ पर struggle करते हुए, but they are crawling and creeping. Now we can see Nongshim Net Forces, BTR, 1 Esports, Skyforces, Sites, and Team D plus Kia on the first page of the overall rankings. But HORAA Esports, kudos, man. I mean, the fellows from the side of HORAA Esports, you guys are just invincible. Just 7 points पीछे हैं first podium spot को लेने से Edge. They're not that far away now, indeed. And HORAA Esports, this is a very good news for the teams and the fans, of course, out there. Boom on the other hand, 53 points, 52 for Boy, 51 for 4,000 DZ with 50. Just 3 point difference between 4 of those teams. Ridiculous matchup we're getting to witness here. ASI 8, 46 points, 40 for DRS, Pandem 35, 29 for FN, 25 for Team Secret. This is turning out to be a banger of a grand final here. If we take a look at the overall MVP, we have Sleepy still holding on to his position there on the top. QXZZ, 4,000 damage dealt, and he is once again going to be in a situation where he might be able to surpass Sleepy HORAA on number 1 spot. But Outlaw actually made his way here in the top 5. Well, overall MVP. These are the players here we have, and Nofi and Nandman 1 and Sleepy at the moment. 2 players on the side of HORAA, and it tells you how well they are performing, right? They are the reason why HORAA is performing the way that they are, and looking forward to see if they can actually close out the chicken dinners. Well, up, and looks like he's as confused as you guys are on how he popped on our screens. But anyway, oh boy,
This is yeah. We gotta do the magic trick again in a moment, folks. But for now, we'll be looking at the second cycle of maps. We have Rondo, Erangel, and Miramar again. Rondo coming in. We'll be expecting other teams to be really aggressive. Once again, the Four Tribes, Team Secret maybe coming up. We have already seen how good DRX are. So all these Korean teams are definitely going to be coming out on top. But teams like HORAA Esports, who are struggling, will they be able to go in for the chicken dinner? That is a main question. They're doing well in terms of all the points, but let's see how things are going to be unfolding. I want to ask someone regarding this, how they're feeling. So let me just bring up my pal Inferno right there. So coming up, coming into the map of Rondo, what are your expectations and how are you feeling already with the 3 matches that we've witnessed here in day number 2 of the Grand Finals? Hey, let me tell you one thing. When did you start doing that magic thing happening? Are you a magician or something now? It's come on, you popping me like that. But yeah, I mean, again, pardon. What was the question? I did not hear you because you just popped me out with your magic anyhow here. I mean, I was just asking, like, what are your expectations going into the map of Rondo? First question. I mean, chaos. I mean, if it's a map of Rondo, so यहाँ पर हम लोग को chaos so जरूर देखने को मिलेगा and chaotic scenarios हम लोग को देखने को मिलेंगे and you know, I was confused right there and I knew with that कि यहाँ पे शायद से कोई और टीम हो सकती थी जो चिकन डिनर लेके जा सकती थी मेरा मार के मैप के ऊपर, but still Team Flash they came on top and somewhere around मेरे को लग रहा था कि Team Flash शायद से eliminate हो सकती है यहाँ पर बहुत ही जल्द पिछले मैच के अंदर, but man oh man, what a great performance it was. Edge, we are done with 3 matches, we are remaining with 3 expectations. They are higher from every team, but especially HORAA Esports. I love that team right now क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने comeback किया है, it is remarkable because they were struggling. Come on, HORAA Esports on the first phase and the second phase, they weren't playing like this. And touch wood, man. I mean, keep on doing the good work and hopefully यहाँ पर ऐसे ही perform अच्छा करते रहे. And let's see HORAA Esports hopefully यहाँ पर runner-ups ना बने, but विजेता बन के जाए इस बारी इस phase का and keep and they will be representing their nation, they will be representing Nepal as well. So let's see which team will be coming on top and especially Edge. मैंने यहाँ पर आपको शुरुआती दिन के अंदर ही बोल दिया था, like the moment we joined at the desk of the playoffs qualifiers, I told you for Team Flash it's not going to be easy this time. There are Korean teams, there is HORAA Esports, there is 4 Tribes, there is Team Sites as well. Did you imagine Team Sites out of nowhere from Pakistan they play like that? I mean, I did not. I mean, not really, but I think you know, with the way things are going right now, there's clearly some potential for these teams, and there's absolutely a really high chance that this team can actually dominate the server from here on forward. Looking forward to them, you know, coming in stronger, going into the next few matches as well. But coming in to the map of Rondo, once again, we're going to be looking at New York's factory coming in towards Dancheng. These 2 areas are probably going to be our main focus at the moment. But coming in, talking about once again Team Secret struggling on towards the in the grand finals, of course. Day number 1, they came in with a different iteration of players. Didn't work out. Day 2, now with the main roster, they're still struggling. Something needs to change. Otherwise, Team Secret might just be the first team to not have a chance of taking it home, the championship, of course, that is. True, and that could be the case scenario. अगला मैच हम लोग यहाँ पर बहुत ही जल्द start करेंगे and what a tiring day it has been Edge already. Cause I did not expect things happening like that and changing like that, but still it is happening. The storyline for Asia Balbush chapter 3rd and phase 3rd especially, Edge, it is changing on a rapid pace. But next map रहेगा आप लोगों का favorite for the viewers out there watching. आप लोगों को यहाँ पर रोंडो का मुकाबला बिल्कुल पसंद क्योंकि हम लोगों को पता है you guys love chaos and you know what, Inferno here as well, I also love chaos along with Edge as well. So Edge, let's just see यहाँ पर कौन सी टीम लेके जाती है chicken dinner क्योंकि ये रहेगा रोंडो का मुकाबला. This is going to be Rondo here, ladies and gentlemen. This is the 4th map of the day in the grand finals, and the flight path will be on our screen. Now coming in. Grand Finals day number 2, of course. After this, we're halfway through the Grand Finals. And I still cannot fathom the fact that we are coming to an end of Chapter 3 here in Inferno. We're almost done with all of the matches that are left here. It's been a month-long journey. And if any of you have not subscribed yet, well, this is the time for you to do it.
this is the time for you to hit that subscribe. Click on that bell icon too, so you don't miss out on the last 2 days of action. And then obviously the furthermore tournaments that come then, of course, follow us on Instagram as well, 1for1 Esports. You can find the link down in the description so you can stay updated with this. Any information, any updates regarding Chapter 3, Chapter 4, any of the other tournaments by 1for1 Esports. And of course, the highlights you'll be witnessing if you just miss out on any of the action coming into these days, as we take a look at the flight path, Rinjang towards Ryan. That's where we are going to be headed down to, as we have a lot of these teams jumping in right now. RIQ probably not going to go for the fights there pretty early into the game, as they are going to be dropping in pretty quickly and pretty early when compared to other teams, and you can already see some fights bursting out at the moment immediately. And I believe that's Wine going into a fight against Skyforce by the circle. Danqing, Tuling, Jinglong Garden, Hengshan, Rinjang. There's a lot of these spaces here on the map that are going to be coming in, that are going to be in the circle. New York's Factory just barely in it. We're going to be witnessing a fight between ASI 8 and 4-Tribes yet again. Last time it was ASI 8 who came out on top. 4-Tribes, well, they were shown the exit door of the lobby pretty early. This time, let's see if that is going to be the case yet again, as we instantly take a look at 4-Tribes. You can see Noki now coming in. Before he could even jump in, he's already taking damage. IQQ is going to be tagged up quite a bit, and Noki's really low. Has to be careful. He will survive for now, and ASI 8 already showing dominance. As Flash, they will get a pick or two here on two couple of players here on the different part of the map. For now, 4-Tribes will survive with 4 players, going for that loot immediately, and I think it's going to be a really important match for them also, because their positioning on the overall right now is in 12. And with 51 points only going into this, these 3 maps are going to be very crucial. They will probably need to accumulate as many points as possible going into this and the next few months as well. So the pressure on them reduces going into day 3 and day 4. Otherwise, things might look a little scary, and well, we all know how the teams perform under pressure. You definitely don't want to be able, don't want to carry it going into the next few maps, the next few days of the grand finals. I mean, it's not like 4-Tribes cannot handle pressure, but we all know having that pressure lingering over your head is probably going to be, just a disadvantage for no reason. I mean, why do you want to carry something that you don't have to, right? And for that, you probably need to have a good game here today coming in on the map of Rondo, Angle, and Miramar. 3 maps left here for all of these teams to the bottom. Team Secret, FN Sejong, Tandem, DRS especially, with only 1 player standing right now. They're already in the verge of getting taken down, and as I say that, they will go for the recall, which means they have all 4 players up. Xavier, SI 8, 4-Tribes, RQ, Boom, D plus Kia, and Sights, I believe. Yeah, up until top 8, top 7 actually. Top 7 can chill for a bit, but every other team below 7th position that are under 60 points, they will have to go and make a play for themselves, make some moves here on the map, and get enough number of points so they can have a good sleep. Good night's sleep is important once again, folks. Make sure that you guys are hydrated. وضافوا لنا همين شغله اسمها صولجان البوابه. من تستعملها تقدر تنتقل من المكان الثاني. One thing about these teams at the moment is that I love is that none of them are overconfident at the moment. All of them are taking their sweet time. And you can see finally SI8 being dropped here by the players inside of 4-Tribes. But will they be able to go for the confirmation? That is going to be the key question, as the players are going to be going in for the revival. So I think this is actually a very quiet rondo. This is not a rondo we were expecting. This is actually turning out to be a very slow-paced start towards the New York's Factory especially. Usually we do see 3 to 4 teams coming in. This time it's only 2 teams, SI and 4-Tribes. You can see the rotations coming in. The players are dropped on either side. They're trying to go for the elimination. T24 might be able to drop one. Yeah. And 4-Tribes 8 player यहाँ पे down, and FALAK हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे. He's just bleeding right now. क्या यहाँ पर players को revive किया जा सकता है या फिर नहीं, देखने वाली चीज रहेगी. But अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं Team 4-Tribes. They're performing
a good one, but अभी के लिए यहाँ पर हुज़ैफा बैठ चुके हैं एंड राइट नाउ स्मोक अपने आगे डाला जाएगा एंड ए साइड ई स्पोर्ट्स का खिलाड़ी शायद से फलक को फिनिश ऑफ करने का पूरा ट्राई करेंगे एंड फोर ट्राइब्स अभी के लिए यहाँ पर पहला एलिमिनेशन लेने के बाद में थोड़ा बहुत स्लो पेस गेम प्ले दिखाते हुए एंड नाउ वी कैन सी एवरीथिंग इज लुकिंग डेड साइलेंट एंड एनीथिंग इज पॉसिबल क्योंकि यहाँ से ये जो 4v4 फाइट्स है कभी भी ब्रेकआउट हो सकती है एंड नाउ फोर्थ ट्राइब्स आई गेस फलक यहाँ पे पूरे के पूरे ब्लीड ऑफ हो जाएंगे एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर रिवाइवल जो है वो पूरा हो सकता है फलक का एंड यस एब्सोल्युटली वही केस सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल जाएगा वो मिस को यहाँ पर कीबो देखने को मिल जाएंगे नाउ वी कैन सी मॉल इज डाउन एंड सोलोमन स्टैंडिंग यहाँ पर रहेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी bad one and I guess Boom Esports के साथ में यहाँ पर बाहर होते हुए Boom Esports they are gone out of the match and इसी के साथ में यहाँ पर एक टीम का एलिमिनेशन ना तो वह पहली टीम यहाँ से जो है एलिमिनेट होती हुई this is going to be a very interesting one now we can see DRX 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर इन लोगों के पास में this is looking a very interesting one and now ग्रेनेड यहाँ पर दागा जाएगा ये जो ग्रेनेड है कभी भी कनेक्ट कर सकता है जी हाँ इसके साथ में ग्रेनेड करेगा कनेक्ट बेहतरीन यहाँ पर ग्रेनेड लैपर डाउन हो चुके हैं व्हाट एन अमेजिंग वन इट वाज नाउ वी कैन सी ट्री ओह माय गॉड यहाँ पर फाइट्स के अंदर आ तो रहे हैं बट इसके साथ में एलिमिनेशन पॉइंट्स का इजाफा होता है एंड दैट टीम दैट्स जस्ट ब्लीडिंग इसके साथ में फायर एंड सोलोमन स्टार्टिंग यहाँ पर रहेंगे एंड आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी वन देयर वी हैव इट फायर एंड सोलोमन स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड ऑफ RQ I guess he'll be going down and he's just burning and there we have it सोलोमन स्टार्टिंग अभी के लिए तो नहीं क्योंकि रिकॉल कर दिया जाएगा इस फाइट के अंदर सोलोमन स्टार्टिंग बचे थे एंड द प्लेयर्स दे आर बैक on the track and they're back here again finally what a great performance at DRX के खिलाड़ी good one so this Korean team performed really well and हम लोग यहाँ पे देख सकते साइड्स के ताज़न डाउन होते हुए and कुछ प्लेयर्स पिक ऑफ होंगे साइड्स मानना पड़ेगा कि यहाँ पे बेहतरीन खेलते हैं and I did not expect team sides ज़्यादा टफ कंपटीशन देंगे कुछ प्लेयर्स को जिगल यहाँ पे दे दो स्प्रे बट मैं बोलूँगा कुछ कनेक्शन नहीं देखने को मिलेगा द ज़ेवियर्स वर्सेस DRS वियतनाम वर्सेस नेपाल नाउ वी कैन सी सम ऑफ द प्लेयर्स आर जस्ट ब्लीडिंग राइट नाउ द ज़ेवियर्स के खिलाड़ी अभी के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदे सिचुएशन के अंदर दो प्लेयर्स यहाँ पे जा चुके एक प्लेयर यहाँ पे ब्लीड हो रहा है ड्रिसी एलन वही हम लोग को देखने को मिल जाएंगे स्टार्टिंग एंड स्टिल ट्राइंग टू बी द बेस्ट And now the Xavier's के शुमाई I guess he's got to be the Solomon standing मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इन लोगों की जो सिचुएशन है अब थोड़ी बहुत सही हो सकती है because at this particular moment it's a very bad situation for them and यहाँ से the Xavier's अगर recall रहा तो मैं बोल सकता हूँ easily हो सकता है and then after that we can see some of the fights got to be happening and now we are going to be having a look on the mini map क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस मिनी मैप के ऊपर ये जो मोस्ट ऑफ द टीम है जोन के बाहर है जोन के अंदर आना पड़ेगा एंड दैट माइट बी अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर देम पैंडम के खिलाड़ी टीम एफएन शॉर्जॉन के अगेंस्ट एंड उन प्लेयर्स को भी डाउन यहाँ पे किया जा रहा है सो व्हिच इज जस्ट इनसेन टीम पैंडम वर्सेटाइल कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं बचा कुछ भी नहीं मिलेगा एंड इसके साथ में आप फाइनल को डाउन करेंगे व्हिच इज अ गुड बॉल अमेजिंग डाउन एंड इसके साथ में वर्सेटाइल अपने आप के ऊपर पॉप इन करेंगे मिड किट व्हिच इज अ रियली गुड 100% ऑफ द एचपी हील हो जाएगी अगर ग्रेनेड आया तो मे बी दिक्कतें हो सकती है हुज़ैफा यहाँ पे पकड़ लेके जाएंगे एंड फोर्थ रेस के खिलाड़ी यहाँ पर K2 के ऊपर ए साइड ही स्पोर्ट्स का 4v4 बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है इसके साथ में एक और ग्रेनेड यहाँ पे दागा जाएगा हुज़ैफा the man with the golden arm and absolutely what a grenade it was and this ID sports the players down the way they'll just give up right now and I guess they're doing a great job oh man that was an insane level of gameplay incoming and now you can see team panel versatile FN shirt against the प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पे दरकार स्टार्ट हो चुकी है अभी यहाँ पर आगे पीछे अंदर बाहर एक एलिमिनेशन पहले यहाँ पे फाइनली लिया एंड दोस वेरी रन वन अपने आप को हील करेंगे फर्स्ट एंड यहाँ पे पॉप इन करी जाएगी फर्स्ट एंड नाउ वी कैन सी एफएन शॉर्जॉन के अगेंस्ट ये जो फाइट है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजी की इस लम्हात के अंदर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आगाज होगा बेहतरीन मजीद प्लेयर्स अभी लॉबी के अंदर 17 टीम्स एंड
60 प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, बट इस सेक्शन के ऊपर एफएल शारजाह वेरी इंपॉर्टेंट 1v1 एक सिंगल बुलेट कनेक्शन, हेडशॉट कनेक्शन भी यहाँ पर आया था, एंड बर्सटाइल के लिए क्लच ऑफ, एक सिंगल बुलेट कनेक्शन, वन सिंगल बुलेट कनेक्शन, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग फॉर. कम ऑन, एंड देयर वी हैव इट, he finds it off, and finally टीम एफएल शारजाह को एलिमिनेट किया. यहाँ पर टीम पैंडम ने विद 4 एलिमिनेशन अपने पॉइंट्स यहाँ पर लेके जाएंगे. HORAA still surviving with 4 players. 2 eliminations going into this. I expected them to go a little harder than what they are doing right now. I expected them to go in a little faster, a little more aggressive than what they are performing right now. But they're taking it easy. A little easy at least. We'll have to wait and watch how these teams are gonna be ending the game. At the moment, we still have the top 5 teams surviving, along with Flash. Top 6 might as well. Top 10 actually, all of them are alive. Most of these teams are outside the zone now. Nongshim, BDR, Deeposkia, 4Tribes, RQ, Xavier, SIA, Pandem. As you can see, all of these teams are pretty much really far away from the safe zone at the moment. So they will have to make their way back into the circle, which is going to be a hassle as stage 3 circle now moves in closer in the next 40 seconds. We are going to be looking at Team Secret losing some more players here on their way in. They've got to be very, very careful as RQ and DRX. They might be ruining the party, ruining the day here for the side of Team Secret. True. And 4Tribes 4 एलिमिनेशन, सभी के सभी खिलाड़ी अपने पैरों पे अभी तक बने रहेंगे. सो कोई भी दिक्कत शायद से अभी के लिए 4Tribes के लिए नहीं, बट नाजुक लम्हात कभी भी आ सकते हैं. सो इम्पोर्टेंट रहेगा कि अपनी इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखें एंड 4 एलिमिनेशन लेने के बाद में ऐसे ही यहाँ पर अच्छे तरीके से परफॉर्म करें. बिगोट्रॉन बाय विटालिटी टीम BATTL विसिनिटी के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लोज देखने को मिल जाएगी. RRQ अभी के लिए यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर, एंड देयर वी हैव इट. जेन फॉस, दैट वाज अ ग्रेनेड टू विटनेस. Oh, the cover fire coming in from Pragos, and the recall actually coming in immediately. Wait, what? No, that was a recall from a previous zone, I believe, because he just landed in. Well, whatever it was, the player is going to be coming in now. So DRX will have 4 players once again. So it was the recalls being made, and you can see players just jumping in right now. Still on stage 3. There is still a lot of these, lot of time for these recalls to be made. A lot of these players still yet to be taken down. A lot of these players still yet to go for those fights. We still have a couple of teams with no elimination points whatsoever. I'm talking about Team Xavier especially, as Team Secret are going to get taken down. The HORAA Esports will be the one putting the screws to them. जी हाँ, and RQ वर्सेस DRX, एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुश्किल नमात के अंदर आएंगे, एंड हुज़ैफा एक बेहतरीन स्प्रे दागेंगे, एंड प्लेयर को यहाँ पर डाउन किया जाएगा. इसी के साथ में यहाँ पर IQ हम लोग देख सकते हैं लीड कर रहे हैं. रिवाइवल की यहाँ पर दरकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बट स्टिल हम लोग पीछे से देख सकते हैं शॉट्स आएंगे. इसी के साथ में यहाँ पर डाउन भी कर दिया जाएगा. G24 OP डाउन हो चुके फलक, एंड हुज़ैफा को भी द डू स्टार्टिंग ऑफ दिस टीम, एंड क्या यहाँ पर सिनारियो रहेंगे. हुज़ैफा जोन के बाहर, द मैन विद द गोल्डन आर्म. स्टिल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फलक के जो ग्रेनेड टॉप पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा. एक और ग्रेनेड यहाँ पर दागा जरूर जा सकता है. Huzzaifa is the solo man standing, no recalls whatsoever. 4Tribes, they are gone. Oh my god, that's so shocking. 4Tribes once again getting taken out. 6 eliminations though, decent I believe, but it's just not enough just yet, as we are down to 14 teams now, 44 players in the server. Stage 4 circle coming into play. We'll be looking at any more recalls that have to be made now. After this, they're not going to be
any more recalls as DRX. Well, even if they do have the recall option, they will not be able to make it because they are gone out of the server. But 9 points in terms of elimination, they are going to be happy. They're probably going to be one of the first teams to hit the 100-point marker. Probably the first one to go for that one. As Flash, I mean, a lot of these eyes are set on them because they are going to be the third-time champion if they do so. But 67 points is now where they are. And it's not going to be easy. It's definitely not going to be an easy mountain to climb. For now, with 3 players standing, they will not be able to go for any recalls here. So these 3 players are going to be the only ones up. Jiggle and Sleepy, the only ones standing right now here for the side of HORAA Esports. Sleepy with 4 eliminations, and those were the 4 that HORAA got. So they are looking, promising at the moment, especially with Sleepy still standing tall. And he is one of the contenders for the overall MVP. He's the overall MVP at the moment, but he probably can build up that lead as we take a look at the other games right now. After this, we still have 2 more maps left, ladies and gentlemen, so do not go anywhere. We'll give you enough time to refill your stacks, but for now, stay tuned. Do not go anywhere as the games, this game at least, is definitely gonna be much more chaotic, and it's gonna get interesting from here on further. As a grenade comes in, Saeed gets taken down. Nongshim is gone as well on the part of the map. As Pandem, they will go for the revival now. They'll have to be careful as they want to take little players instead of deepest here. It's a 2v2 situation, and Pandem is really low. Once again, the grenade will drop down another player. The grenade is being cooked. Maybe cooked to perfection, or maybe not. He's going to be out in the open now. He's going to get taken down too. But I'm not really sure who took him down. It's going to be Otto, actually, with the frag there. And now Pandem are gone. 11th position, and with 4 eliminations, I believe. They're going to be gone with 39 points in total, 16th position on the overall at the moment. Not a great position to be in, but we're down to top 10 teams, 30 players now in the server, 70-minute mark hit, stage 4 circle coming in to close in the next few seconds, 35 seconds to be exact. So this does give these times to get into a better position and get themselves posted in positions where they think the circle might be coming in. And, well, it's about time that they choose their battles against the teams that are alive in the server. Not going to be easy, but definitely not going to be impossible. BTR are gone. Top 9. The last 7 player was just taken away. At the moment, HORAA Esports with 2, DK with 2, RIQ with 2 as well. Everyone's taking their sweet time. Once again, there's a lot of space in that circle right now. DRS, RQ might actually wait a second. RQ with these 2 players standing could actually get taken down. So they will have to make their way back into the circle pretty easily and get themselves into a position where they can actually survive. As Sights will lose 1, 9-9 is gone. That's going to be them down to 2 players now. Skyforce with no eliminations, another squad. Along with Xavier, as I was talking about, 2 squads that are coming in with no eliminations going into this one. At the moment, Jiggle is gone. Sleepy now the only one standing. Will be healing himself up, but could be spotted as Godless. He has his aim on him. As Sancher is the only one with any points coming in for Skyforce as Sleepy HORAA. Takes a bit of damage, but it probably is going to be the end of him as he's going to be spotted out in the open. He's dropped. Godless gets a beautiful shot on him as HORAA Esports. 5 eliminations. Once again, decent in terms of elimination, but none in terms of position placement, unfortunately, as now they divert their attention towards the players inside of Void. Those players are going to be raining in. The circle's going to be closing in too, so they're going to have to make a move at the same time to calculate no players inside of Void. With 4 players standing on both sides, this is going to be a classic 4v4 battle. It's going to be coming down to the utilities used and the smoke grenades coming in, used as screens to use as cover, of course, as Void. They will be, I believe, retreating at the moment. But these players inside of Skyforce, they might want to take the fight because they understand the confidence that they have right now. And Void, they are looking good as well in terms of position placement. They're on 73 total points and 5th position on the overall standings, along with Skyforce on 7th, but they are 7 points away too. So things are looking grim when you consider both of these teams. For Skyforce, of course. But anything can happen. We're hitting the 20-minute mark. 8 teams now in the server. 22 players. Stage 5 will come to a close in the next minute.
We'll be looking at the final few fights now, breaking out here towards this part of the map. Dancheng is where we are heading towards. With top 8 teams, 22 players remaining. Any predictions here, Inferno? No predictions, man. Everything's looking so unpredictable right now, and expectations of the events are just happening. And now we can see that कि यहाँ पे Sky Forces के Godless bleed करते हुए but Erno and Xavier को shots को यहाँ पे दागे जाएंगे. Godless कब तक यहाँ पे survive कर सकते हैं? एक और यहाँ पे revive कर दिया जाएगा. जी हाँ, इसके साथ में यहाँ पे revival पूरा हो चुका है. इसके साथ में और भी यहाँ पर आगे बढ़ के grenades आगे जा रहे हैं. जी हाँ, इसी के साथ में यहाँ पे this is looking way too dominant. Grenades से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं. One esports zone भी यहाँ पर cut off हो जाएगा 20 सेकंड के अंदर. Zone को भी यहाँ पे prioritize करना है. एक और grenade यहाँ पे सामने से आएगा. Maybe connection लेकर आएगा. जी हाँ, that grenade I was looking forward to that one. And Sky Forces यहाँ सोते हुए बाहर. Top 6, top 15 players and 21 मिनट का marker is about to hit. Edge 5 और second 4 और second. इसी के साथ में यहाँ पे जो zone है close in करेगा. And the drift is going to be important to look out for. One will be in a bit of a troublesome situation as they will have to now make their way back in. Out in the open as well is where they have to go. They're deciding on what to do. Do they go in different vehicles or use the same vehicle to make their way back in? With 3 players standing now, those 4 eliminations are going to be very important for Wine. They're up to 8 eliminations now, and Flash are still surviving with 2 players. If they get another chicken dinner, those 10 points could actually help them a lot in the overall standings. True. And now, DRS Gaming. 12 elimination. This Nepali powerhouse is playing good. And now हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं D+ किया इन लोग जस्ट आगे and I guess उसका आखिरी प्लेयर ही यहाँ पे जिंदा रहेगा. जी हाँ, 11 एलिमिनेशन लोगों ने किया. But the thing is यहाँ पे Solomon standing है. So I don't think so Edge की अगर ये chicken dinner ले भी पाए so दिक्कत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बन सकती है. Solomon standing है. So anything is damn possible for D+ किया. Survive कर सकते हैं. And वो जो Solomon standing है, he could be the main character for all these teams. क्योंकि कभी भी third party initiate करवा सकते हैं. कभी भी यहाँ पे shots आ सकते हैं उनकी तरफ से. And now we can see यहाँ पर One esports के potato down हो चुके हैं and he's gone. DRS के खिलाड़ी 12 एलिमिनेशन लोग के पास में. And now कभी भी ये players जो है एक और 4v4 initial battle pick off कर सकते हैं. DRS 4v4 तो मैं नहीं बोलूँगा Edge but 4v2 battles यहाँ पे हो सकती है because One esports की एक ऐसी टीम है जिनके पास में सबसे ज़्यादा numbers advantage है. Yeah, I mean apart from DRS with 4 players, One is the next in line with 3. So this is probably going to be a very important scenario for the side of DRS to capitalize on those numbers, make sure that they don't lose it, keep that numbers advantage in their favor going towards the end of the game so they can come out on top towards those final zones. Stage 6 now coming in, closing in a minute. Things are looking very good for DRS in terms of elimination points, in terms of man advantage, in terms of position too. This could be the game that they've been waiting for. 52 points already for themselves. 13 position is where they're on right now. But will they be able to capitalize? The cover taken by Voin right now is good, is looking decent. No one has to worry about their positioning here on the map in the circle. But D+ here, the last surviving player, will be applying pressure to the players inside of Flash as the knock is good. And I believe the confirmation will come in too. Oh boy, and now Flash also down to just 1 player. Yeah, Team Flash also down to the 1 player, and now One esports. 8 elimination and potato Solomon standing यहाँ पर एक ही player यहाँ पर बाहर हुआ था, but still हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं DRS वो जो नेपाली टीम है, वो जो नेपाली giants यहाँ से आसपास घूम रहे हैं. इसके साथ में एक बेहतरीन फ्रैग की तरफ से grenade आएगा, and that kill feed that was way too animated, but still DRS they're looking way too vigilant at this game right now. हो सकता है यहाँ से जो फाइट है बेहतरीन हो सके. साइक्लोन को यहाँ पे पिक ऑफ किया जाएगा. RQ की टीम हो चुकी बाहर. एक और एलिमिनेशन दिया डाउन फॉर टॉप 5 टीम्स. टीम D+ किया सर्वाइविंग विद 1 Zeta यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा. द Xaviers के खिलाड़ियों की तरफ से 3 टीम्स, द 3 पावर हाउसेस जायंट्स. बट टीम फ्लैश कहाँ है वो आखिरी खिलाड़ी and where he is hiding towards? That is probably the question everyone's asking at the moment. And Auto on the side of D+ Kia, even though he's the last one standing, he's not letting it go. And well, there you go. Bolt is gone. Another point for DRS.
They're looking dominant. They're looking really good. Killer White TV, 1200 damage. For a second, I actually thought it was 2000, but that's 1200 damage, which is pretty interesting and pretty scary too if you're against them. Once again, ladies and gentlemen, this is the map of Rondo. 4th game of the day. We have 2 more after this. So if you're just joining us, well, this is PUBG Mobile Asia Battle Wars Chapter 3, Phase 3, Grand Finals. If you haven't subscribed, hit the subscribe. And if you haven't, clicked on the bell icon, make sure to do that too so you don't miss out on any of the actions and not be this late. Come on, this is not right. We need you here. These teams need you here, supporting, cheering for them. No matter who you're supporting for or who you're cheering for, it's always good to have some support and have people backing you up. At the moment, Xavier, Wine, D+K, and DRS, the 4 teams surviving, and DRS probably the favorites to win. True, the favorites to the win. And now DRS Gaming अपने vehicles को घुमाते हुए and somewhere around advantage है, and जो advantage है, जो min power है, उसके यहाँ पर disadvantage नहीं बनने दिया. Capitalization बिल्कुल हाँ आएगा. And इसके साथ में शायद से auto उनकी भी positioning जो है reveal हो चुकी है, so replace किया is not going to be good for them. And now we can see कि यहाँ पर DRS उन लोगों ने अपनी थोड़ा बहुत पोजीशनिंग जरूर चेंज करी, बट यहाँ पे स्प्लिट खेल रहे हैं. एक 2-on-2 का स्प्लिट यहाँ पे खेला जाएगा. फ्रैग को यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा. दिस इज वे टू बैड फॉर देम. ओह नो, DRS इफ अगर ऐसे खेलते रहे, ऐसे ही डाउन होते रहे, तो मैं बोलूंगा शायद से जो फाइट है उन लोगों के अगेंस्ट जाएगी. एंड वॉइड नीड्स दे माइट एक्चुअली पिक दिस ऑफ. DRS, on the other hand, still have to be the one coming out on top, if you ask me. I don't think the advantage is going to be leaning towards anyone else at the moment. Otto, he has been a menace. Even though he's the last man standing, he's unfazed and he doesn't really care. If he goes down, he goes down. But if he's going to make an impact. That is what his decision is. Oh, that cover has saved him. Oh, beautiful smoke there to cover himself. More smokes being deployed at the moment. But that grenade, ooh, the moves are good. And he's going to be careful. He's going to be carefully going back to the same spot. But the grenades are raining in and he's taking a bit of damage and he has to be careful. The heal. Will it come in time? It will. And he will survive for now. But the grenades are going to non-stop come in for sure. As we now take a look at the fight between Xavier and DRS and also Voin actually. It's a 3-way split. There's going to be a knock on all 3 of those teams. True. He's gone. And DRS, they're looking good. One esports के बाहर होने के बाद में यहाँ पर सिर्फ Xaviers और DK हम लोग को देखने मिल जाएंगे. And D+ किया काबुल जो आखिरी प्लेयर है अभी तक यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है. ग्रेनेड वाज गुड. एक और ग्रेनेड जाएगा फ्रैग की तरफ से, तो मैं बोल रहा हूँ शायद से प्लेयर डाउन हो सकता है. बट फ्रैग ही इज एग्जॉस्टेड विद ऑल द यूटिलिटीज. एक मोलोटोव यहाँ पर जरूर डाल सकती थी, शायद से वो प्लेयर जो है डाउन हो सकता था. बट मैन ओ मैन, DRS finally the Nepali Giants coming on top and making this one happen. And now this is 3 teams and 1 winner. Ash, what do you think? I guess the DRS, they're having the better chance to make this one. I think so too. I think DRS is going to be the ones coming out on top. Finally, it's about time. You know, they worked really hard. They worked their way to the top through playoffs. They've been the fan favorites for 2 phases. They've been knocked down as the fan favorites going into phase 3 as ASI overtook them and 4 tries were in 2nd position. But it's time for them to rise from the ashes again. DRS Gaming, after so long, are finally gonna be back on the track with the winner, chicken dinner, and not just that, insane amount of eliminations going in. I believe that's a 30 bomber being dropped by them here, almost at least. So DRS, they're going to be happy, the fans are going to be happy, and I'm sure you and me are also going to be delighted with this. True, man, absolutely. What a great matchup it was. It was our 4th match of our day. इसके बाद हम लोग यहाँ पर witness करेंगे Irangle and then Miramar again. But what a great matchup it was, and we are done with freaking Rondo. It will be having a look onto our highlights. और highlights से बढ़ने से पहले guys, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर अभी सब्सक्राइब करिए 141 esports के चैनल को, and keep on supporting 141 esports because these guys are putting up a great show and especially gave the opportunity for us, for you all, to witness this amazing title in the name of Asia Battle Wars Chapter 3. Let's just head towards to our match highlights. And RQ, man, they were just waiting right there. And RQ, they were really close to making that happen, but it did not happen so far.
Yeah, I mean, RQ, they had a really good chance to close things off here. And looking at the New York's factory area, right? It just feels like it's been a battle. It's been a power struggle, to be exact, here between 4th Tribes and ASI towards that part of the map. And at the moment, things are looking good for both of these teams. But both of these teams need to step up at the same time. It's okay, but it's not great. You're not going to be fighting for top 18, top 16 anymore. You're looking to get that number 1 spot. And that is not going to be an easy task, especially with the other teams performing like the way they are. DRX, D plus Kia coming in, Flash once again stepping up. A lot of these teams looking really, really good. So for ASI 8 and 4th Tribes, the only 2 teams, no, actually 3 teams, come on. Sites also coming in. But ASI 8 and 4th Tribes, both of these teams, they need to step up. Otherwise, things will not look good for them moving into the next 2 days to Grand Finals. True, and after this Skyforce, godless 79, we have seen Skyforce is playing amazingly, an immense level performance, and वो esports के against यहाँ पे जो fight थी Skyforce उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, but कहीं ना कहीं वो जो upper hand का advantage था उनके पास में नहीं है, बरकरार नहीं कर पाए थे इस मैच के अंदर, and इसके दौरान मतलब top 5 players जिंदा थे, जहाँ पर हम लोगों ने देखा बोस का elimination point आता हुआ, and man, I mean one esports ये था उन लोगों का elimination, and the Xavier's के खिलाड़ी, they will party spoilers for them, man. And now let's just have a look onto our winning team stats, जहाँ पर DRS के खिलाड़ी लेके गए थे chicken dinner, and now we can see DRS they played amazingly, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उन लोगों के पास में कितने ज़्यादा elimination point थे. Man, this is just so insane. 18 elimination points and 28 points, guys. This is not a small number at all. This is just an amazing number. Oh my God. DRS, the last from Nepal, it turned out to be an amazing one. Killer Whitey, यहाँ पर 8 elimination and 6 knockout. अकेला ही एक इंसान यहाँ पर इतने ज़्यादा elimination points. ये खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेला, but still देखिए guys, इतना बड़ा नंबर है ना, 8 elimination एक single game के अंदर निकाले. It's not going to be a small one, and I guess मेरे को लग रहा है कि Killer Whitey somewhere around हम लोग को देखने को मिल जाएंगे MVP के अंदर, overall MVP के अंदर, and maybe कुछ changes या फिर shifts हम लोग को MVP के अंदर देखने को मिल सकते हैं. That is for sure. Top 4 teams हमारे screen के ऊपर, and of course man, it has to be Killer Whitey, then Kent, then with Frag, and then Sleepy from the side of HORAA Esports, and नेपाली टीम्स, एंड स्पेशली जितनी भी यहाँ पर नेपाली टीम्स है, मैं बोलूंगा इन लोग का शायद से जो कमबैक है यहाँ पर फाइनली आता हुआ, क्योंकि ऑल द नेपाली टीम्स दे आर बैक इन द सर्किट एंड दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग लाइक बीस्ट. खुले भेड़ों के जैसे यहाँ पर छोड़ दिया गया था यहाँ पर जितने भी नेपाली प्लेयर्स थे, एंड आई मीन इनसेन यार, मतलब ऐसे ही परफॉर्मेंस यहाँ पे करेंगे, एंड स्पेशली HORAA Esports दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर इन प्लेयर्स की, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन अब आया है HORAA Esports का, मैन, ये पहले आता तो शायद से हम लोगों को फेजेस के अंदर या फिर पिछले फेज क्वालिफायर्स के अंदर और भी ज्यादा इनकी जो परफॉर्मेंस थी शार्पन देखने को मिल सकती थी. बट नजर डालते एक बारी टीम्स टू वॉच आउट के अंदर, अगले आने वाले मैच के अंदर जो रहेंगे हमारे DRS की टीम 18 पॉइंट्स के साथ में, वन esports हम लोग को देखने को मिल जाएगी 8 पॉइंट्स एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ में. टीम D plus Kia लेके जाएंगे 13, एंड टीम DRX फ्रॉम द कोरिया दे विल बी टेकिंग 9 elimination points. They just totally deserve it. Let's just have a look onto a match summary, because we have seen 116 total elimination incoming, 13 freaking grenade elimination incoming, 2 airdrops were looted, 15,000 plus healings were done, and 369-meter incoming with the longest elimination from Seraph Tree. This has been a phenomenal match of Rondo here coming in. As we take a look at the match standings, we will understand the points that were accumulated. Now, starting off from the bottom, Ashley, boom, unfortunate once again with 0 points. Nongshim with 3, 4 points for Pandam Team Secret and Skyforce, 5 for SI and HORAA